Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, Zaidji. Good morning, Varun. जो भी डाउट्स है पूछ लो. We will start the streaming in 2 minutes. Very good morning, Ram to Ram. Good morning, Ritesh. Yeah, this system is lagging. हाँ अर्षित लैग है थोड़ा. उसी का वेट कर रहा हूँ. उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है. सर्वर कर रहा है. अभी बंद ही हो जाएगा ट्रेडिंग. आ गया. ग्रेट. चार्ट भी तो दिखा दो. Yes. Guys, servers are back.
So what are the major things that we need to keep in mind? कल के दिन में पूरा एनालिटिकल एनालिसिस स्टॉक के लिए था, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब पॉइंट, एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज किया. What are the next major things that we have to look for? So the major thing is a precision allocation points. How do you look for a precision allocation points? The allocation is always taken under the consideration of the previous mapping point of TTS 2.0. How is that looked into the current scenario? The current scenario can be taken in precision of 15 minutes for ID traders. How do you look for it? Right? From this point of action, हमारा जो TTS 2.0 complete हुआ था, formulative number, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से हमें मेजर अलोकेशन फर्स्ट पॉइंट आउट करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से, राइट. विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, व्हाट डू द मार्केट ऑलवेज टेंड टू डू? कंप्लीट 150 200 if the hunt is there as well at the formulative number, right. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ 200% का. 200% का टारगेट कंप्लीट होने के बाद व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? Market tend to break the formation at the reversal point. उस reversal point में क्या हमें volume indicate हुआ 1 hour में? First we have to check that. In this point of action, कल के दिन में पूरा दिन market एक iceberg zone में था. Alright? So when the market was in an iceberg zone, what did market tend to do post that? Market created a high volume in this current candle, जो कि एग्जैक्टली हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर के पास था, करेक्ट. सो विच इज दिस कैंडल. उसके बाद मार्केट प्लेड अराउंड इन द सेम जोन. व्हाट डू वी नोटिस? लिक्विडिटी ग्रैप पॉइंट 1, लिक्विडिटी ग्रैप पॉइंट 2 एंड इंटैक्ट लेवल. जब इंटैक्ट लेवल बिल्ड आउट हुआ, व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू हैव टू बी लुकिंग एट? कैन वी गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन? नेवर. नेवर डू दैट व्हेन द वॉल्यूम हैज अ स्पाइक. अगर ऊपर भी देखना है, पहला नीचे गिरने दो, उसके बाद ऊपर. नॉट प्रायर टू दैट एट ऑल, राइट. सो इन दैट पॉइंट ऑफ एक्शन, व्हाट आर द नेक्स्ट मेजर थिंग्स? 200% रिजेक्शन तो ले लिया है. उस रिजेक्शन के बाद हमें चाहिए अलॉटिंग पॉइंट ऑफ अ मेजर डिमांड विच इज टेकन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट. इन दैट पॉसिबल अलोकेशन पॉइंट कौन सा होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये वाला, राइट. सो व्हेन दैट इज टेकन अंडर द प्ले, 200% रिजेक्शन है, तो क्या करेंगे हम? 200% का अलोकेशन जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिमांड है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से अलॉट हो, राइट. अलॉटमेंट 1, ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक एंड कंटिन्यू होने के बाद 150% रिजेक्शन. इस 150% रिजेक्शन होने के बाद व्हाट इज द वन मेजर थिंग दैट वी नीड? We need a conversion, right. What is the conversion? In the reversal point of action, conversion जो हमें चाहिए वो conversion है demand converted into supply, right. So retracement point of view के हिसाब से कौन सा demand को allot करेंगे? ब्रेक तो यहाँ पे हुआ है, राइट. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रिट्रेसमेंट कहाँ पे है हमारा? रिट्रेसमेंट यहाँ पे, right. So this will be our conversion retracement. Placing it on the top, 1 and 2.
right? 150% rejection, 150% rejection के साथ market has created a nice three-wing setup. With a three-wing setup, execution was taken under to the play of short, right? So with this, what are the next major things that needs to be kept in the mind? Okay, डायरेक्शन तो बेरिश हो गया, एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद ब्रेक भी हो गया, ब्रेक होते ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का डिमांड अलॉट होगा. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का डिमांड अलोकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट? सो ये आईडी के हिसाब से हमने अलॉट किया 1, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू होने के बाद 200% मैपिंग, right? So once this 200% mapping is done, what is the next thing that we have to think? आईडी के हिसाब से तो सरप्लस भी क्रिएट हुआ है 150% से 200% ब्रेक भी हुआ. व्हाट इज द नेक्स्ट अलोकेशन? 15 मिनट्स के हिसाब से सरप्लस पॉइंट ऑफ एक्शन फ्रॉम 0 to 150 बिकॉज वी हैव अ रिट्रेसमेंट एट 150 पॉइंट, राइट? So that retracement come in a play with an action, right? So जैसे ही हमारा allocation surplus का हुआ, market dropped down below and then took a rejection, not exactly from the surplus 100%. Why? यहाँ पे आएंगे 1 hour screening, right? So इस 1 hour screening में what are the major things that you have to look for and be in the direction? एक major चीज किस चीज के ऊपर रहना चाहिए? फर्स्ट अलोकेशन हमने यहाँ से लिया, करेक्ट, 1 hour का. सो जब फर्स्ट अलोकेशन 1 hour का ये है तो ये भी सेम ही है, राइट? ये भी सेम ही है. सो ये तीनों मूवमेंट जब आता है प्ले पे, एक ही साथ में, what do we look for? We look for a second serving. Where is the second serving? Second serving is from this point till this point, right? सेकेंड सर्विंग जब मैप करोगे टॉप पॉइंट से, व्हाट डू वी नोटिस? 50% के ऊपर से हमें मिनिमलिटी M1 क्रिएट होते हुए दिखी, राइट? सो जब मिनिमलिटी M1 क्रिएट होता है, ऑन द ब्रेक द टारगेट्स आर लुक्ड इन पर्सपेक्टिव ऑफ 150% डायरेक्टली, राइट? सो 150% का 1 hour का टारगेट कंप्लीट किया, ब्रेक, ब्रेक होने के बाद S2B1 के साथ फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हुई है एंड उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एंट्री. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से अलोकेशन कौन सा होगा? फिर से सप्लाई अलोकेट करके चलना है. 150% से ब्रेक हुआ है तो ये होगा, करेक्ट? इसको यहाँ पे अलॉट करोगे तो ये 200% से रिजेक्शन दिखा है, राइट? यहाँ पे विक से क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हाई विक रेंज नहीं है, बॉडी इज बिगर देन द विक. सो वी हैव टेकन द कंसिडरेशन ऑफ मैपिंग. ओके, now what are the today's movement plan that you have to focus? 150% से रिजेक्शन ले रहा है, नियरेस्ट TTS 2.0 फॉर्मुलेटिव नंबर अलॉट करो, प्रॉब्लम नहीं है. उसके साथ व्हाट डू वी नोटिस इन 1 hour? मार्केट इज इन आइसबर्ग जोन. आइसबर्ग जोन में डायरेक्शन सेम ही होगा जिस डायरेक्शन में मार्केट ड्रॉप आउट करता है, राइट? टिल द टाइम द एंटायर structure of volume doesn't change, we won't look for a reversal plan of action again. Okay, any doubts in gold? Please do ask. Good morning, Rakesh. Too much lag is there. Please change the color of the cursor. It's not visible in the white background sometimes. What are you frustrated of today, man? And how do you change the color of cursor? Please let me know. I will do it.
ओके, मेरे को नहीं पता है, लेट मी चेक. Hey Alexa, how to change the color of cursor point from white to black? Okay, it says go to settings, TP1 hit of 110 pips. I get it, man. It's too frustrating. Totally agree. के बाद accessibility. माउस पॉइंटर है ही नहीं इधर. वन 150 pips running. It's lagging, sir. Manageable. डबल कर लो. सस्टेन होगा ये. हाँ, एड ऑन के लिए डबल बोला ना. नेक्स्ट कैंडल जैसे रिजेक्शन लेगा, डायरेक्शन. 1 आवर देखो ना. 1 आवर अभी जस्ट शुरू हुआ है तो फ्लक्चुएशन तो दिखाएगा. व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? राइट, अ न्यू कैंडल, रिजेक्शन. यहाँ पे है इंटैक्ट. राइट, तो वो इंटैक्ट फर्स्ट कंप्लीट होना है, उसके बाद कंटिन्यूटी. डायरेक्ट जाता है तो आई एम नॉट रेडी फॉर द लॉन्ग ट्रेड. इट शुड कंप्लीट दिस पॉइंट. आज एक दिन बेयर कर लो गाइस. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस.
नहीं, बीटीसी एग्जैक्टली हमारा रिजेक्शन पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है। स्ट्रीम डालना ही नहीं था आज। सर क्या आपने आईपीओ इन्वेस्ट किया है? कौन सा आईपीओ? बिलियन ब्रेन्स गैराज। ग्रो बोलो ना डायरेक्टली। यस। कितना शेयर्स उठाया है? आईपीओ में मैक्स उसमें 2 लाख का था, 2000 शेयर्स। अलॉटमेंट के हिसाब से।